अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान और नॉर्वे के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। अफ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साला शराकतदारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में नॉर्वे के मुतादिद कंपनियां कारोबार कर रही हैं। नॉर्वेजियन कंपनियां पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। US, Iran and before India-Pakistan war, we cherish your friendship. Norway is housing 60,000 Pakistanis and there's a great diaspora. We had the opportunity to meet shortly on 23rd of July in Manila, and your colleague was welcomed here. In May, it was a good meeting with him. He was flying from here to Tehran, but I understand you are going back. You are not visiting Tehran during this trip. Not this time. But we have this, as I said, that this great relations of 78 years of. पावर डिवीजन ने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए 1 अरब रुपए के पहले नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम का बाज़ाबिता आगाज़ कर दिया। वज़ारत तवानाई ने पाकिस्तान के पहले नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। कौमी प्रोग्राम के लिए इनोवेशन हब मखसूस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम है। आपको बताएंगे, इनोवेशन के हवाले से पावर डिवीजन ने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए 1 अरब रुपए के पहले नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम का बाकायदा और बाज़ाबिता तौर पर आगाज़ कर दिया है। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन। जी राना यमीन, बताइएगा, इस प्रोग्राम का बाज़ाबिता जो है वो आगाज़ कर दिया गया। जी बिल्कुल, पावर डिवीजन ने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए 1 अरब रुपए के पहले नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। वज़ारत तवानाई ने पाकिस्तान के पहले नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम का आगाज किया है। कौमी प्रोग्राम के लिए इनोवेशन हब मखसूस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम पाकिस्तान के पावर सेक्टर में नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए एक अहम कदम है। इनोवेशन हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों, महक़क़ीन, जामियात, स्टार्टअप, सनत और माहिरीन को इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की बदौलत मुल्क को दरपेश तवानाई के चैलेंज के लिए बेहतरीन हल तैयार किए जा सकेंगे। प्रोग्राम 3 वर्षों के दौरान 1 अरब रुपए से जायद की रकम कामयाब मनसूबों के लिए मुख्तस की गई है। हर कामयाब नौजवान को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन सरदार वैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि मुसलसल रिसर्च और नौजवानों के पावर सेक्टर को सिर्फ मजीद मेहनत की नहीं बल्कि तकनीकी सोच की जरूरत है। नेशनल पावर सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम महज एक मुकाबला नहीं बल्कि एक मुस्तकिल कौमी इदारा जाती निज़ाम है। उन्होंने कहा इस प्रोग्राम में नौजवानों की सरपरस्ती की जाएगी, इन्हें रहनुमाई और अमली मामलत फराहम की जाएगी। बेहतरीन रिसर्च को काबिल अमल मंसूबों में तब्दील किया जाएगा, जबकि इनोवेशन हब। बहुत शुक्रिया आपका राना यमीन। ईरान के आला ओहदेदार ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी और ईरानी अवाम में मोहब्बत दुनिया में बेमिसाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने मुलाकात की, जिसमें मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के स्ट्रेटजिक मुआविन हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और अवाम इस्लामी दुनिया का अजीम असासा है। मोहसिन रज़ाई ने मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद और यकजहती पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया मिलकर काम करें। इस मौका पर वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात गुज़श्ता चंद माह में मज़ीद मजबूत हुए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेड क्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का अचानक दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम सुस्तरबी का शिकार, मजदूर गायब होने पर बरहमी का इजहार किया। इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ था। मजदूर ने बताया 9 बंदे काम करते हैं, चंद रोज से काम रुका हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौका पर ही मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन किया और हेड क्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अचानक दौरा किया और प्रोजेक्ट पर पेश रफ्त न होने पर अफसोस हुआ। जश्न आज़ादी में एक रोज़ बाकी है। पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। यौम आज़ादी के मौका पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इस दिन को भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जाए। इसीलिए मुहिब वतन शहरी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों इमारतों पर कौमी परचम आवेज़ा हैं। मार्केटें और बाजार झंडियों, बैजेज और आराइशी अशिया से सज चुके। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के सिलसिले में सजाए गए बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर है। बड़ों के साथ साथ बच्चों का जमे गफीर भी बाजारों में उमड़ आया। स्टॉल्स पर बड़े झंडे, झंडियाँ, बच्चों के लिए मास्क, बैजेस, घड़ियाँ और टोपियाँ भी रखी गई हैं। किसी को गाड़ी के लिए झंडा चाहिए तो कोई मोटरसाइकिल पर झंडी लगवा रहा है, कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम खरीद रहा है तो कोई छोटी झंडियाँ खरीदने में मसरूफ़ है। कुछ लोग ख़वातीन और बच्चियों के लिए सब्ज़ हिलाली रंग की चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। यौम आज़ादी की मुनासबत से सब्ज़ हिलाली रंग के मलबूसात भी बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बच्चियाँ सब्ज़ और सफ़ेद रंग की फ्रॉक्स और ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि नन्हे बच्चे चांद तारे वाली शर्ट्स खरीद रहे हैं। कराची आर्ट काउंसिल के सदर अहमद शाह ने कहा हम सीसा पिलाई दीवार हैं और एक झंडे तले एक कौम है। नुमाइंदा TP2 डे सरवत जबीन के साथ 14 अगस्त पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अब आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे तो मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एक झंडा, एक मुल्क, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। कौमी ज़बान हमारी उर्दू है, लेकिन हमारी यकजहती, ये 14 अगस्त के मौके पे हमारा पैगाम जो है वो यकजहती का है। वो कश्मीर के इंडिया के बॉर्डरों से लेकर गिलगित में चाइना के बॉर्डर्स तक और इधर बलूचिस्तान में साहिल समंदर और अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर तक एक ही पैगाम है कि ये एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारी कौम है। आपस में हमारे जो भी मसाइल हों, जब कोई ऐसा टाइम आता है पाकिस्तान का दुश्मन को इस पे बुरी नज़र डालता है तो ये सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है। जैसे पिछले साल आपने देखा कि 4 दिन में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और वो दुम दबा के भागा मार्का हक के मौके पर। तो ये भी एक तरह का रिवाइवल है। ये 14 अगस्त अपने शहीदों को याद करने का, ये वतन हासिल करने के लिए जिन अजीम लोगों ने जद्दोजहद की उनको याद करने का और अगली नस्ल तक ये पैगाम पहुँचाने का, और हम जो सब यही। अभी आपको बरह रास्त ली चलेंगे जहाँ पे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। To receive you today in Pakistan. Bearing in mind that we have existing goodwill on both sides, I look forward to more frequent exchanges between our two friendly countries in the months and years to come. Ladies and gentlemen, our discussions today were warm, constructive and wide-ranging. We took stock of the existing Pakistan-Norway bilateral relations and agreed to undertake steps to enhance our relations as well as cooperation in all other areas of mutual interest, including trade and investment, education, defense, climate change, IT and maritime affairs. Pakistan greatly values its relations with Norway and looks forward to further strengthening these ties in the days and weeks and months to come. It is a matter of great privilege and satisfaction that the bilateral political consultations between our two countries have become a regular feature. We are looking forward to hosting the next round of BPC in Islamabad later this year in the winter. Both sides agreed
that our bilateral trade is below the potential of both economies and need to be enhanced through effective measures. Pakistan offers enormous investment opportunities to Norwegian companies, and it is heartening to see many leading Norwegian companies investing in Pakistan. A renowned Norwegian company, Yara International, is establishing a joint venture in plant nutrition with Fauji Fertilizer Company in Pakistan. Ladies and gentlemen, Excellencies, I hope this initiative will be a trailblazer for many more future projects between our two great countries. Our technology partnership with Norway is a success story. Pakistan IT exports to Norway have grown more than fivefold in the last 2 years, and I have no doubt that this is only the beginning. We also agreed on the expeditious finalization of various agreements and MOUs under process between our two countries and are in progress with different ministries in our respective countries. Pakistan share a convergence of perspectives on climate change. It was a very good discussion. It is heartening to note that Pakistan and Norway signed the MOU under Article 6 of the Paris Agreement on 1st of April this year. We also discussed cooperation in maritime affairs. I briefed my friend that Pakistan is one of the world's largest ship recycling facilities, and our strategic location makes it the most competitive and nearest recycling destination in this maritime region for ships coming from Norway. We are grateful to Norway's maritime authorities for their support in building capacity and providing technical training for Pakistan's shipbreaking industry, in line with the Hong Kong Convention. Ladies and gentlemen, both Pakistan and Norway agreed to enhance people-to-people contacts, which can become defining for our relations and serve as social and cultural bridges between the two countries. We also noted that Pakistan-Norway parliamentarian friendship groups have been established in the Senate and the National Assembly of Pakistan to promote cooperation between the two countries' parliamentary bodies. Labor mobility was also a key area that we discussed. We agreed to continue work on legal pathways for Pakistan's skilled manpower, stressing the need to combat human smuggling and illegal migration. Both sides agreed that by providing safe, orderly and regular migration channels, we not only protect migrants' rights and lives, but also dismantle the illegal model of smuggling human rights networks. Both Pakistan and Norway share a commitment to multilateralism, the principles of the United Nations Charter, respect for sovereignty and territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes. Our two countries remain actively engaged on issues related to UN Security Council, and the two sides have strong convergence of views on major issues. Building on our previous experience working together in international bodies and multilateral fora, both sides affirmed their desire to continue mutual support and consultations in such forums. Ladies and gentlemen, during our discussions, I briefed Excellency, my friend, and his delegation on the issue of Jammu and Kashmir, which remains one of the long-standing unresolved international disputes and has been on the UN Security Council agenda since 1948, with numerous resolutions adopted on it by the Security Council since then. I also briefed His Excellency, my friend, that India had added a new dimension to an already volatile security situation by unilaterally announcing the abeyance of Indus Water Treaty in contravention of international law. We reiterate that India must end the weaponization of water and uphold its treaty obligations under the international legal obligations. I also briefed His Excellency Foreign Minister of Norway on our diplomatic efforts to promote dialogue, de-escalation and peaceful settlement of the US-Iran conflict. I am grateful to His Excellency for appreciating Pakistan's role as a mediator in the conflict. Excellency has been actively in contact with me throughout post-28th of February issue, and we have been exchanging notes and updating each other on the developments which have been taking place in this context. I also shared and we also discussed broadly the latest trilateral agreement between Turkey
Saudi Arabia and Pakistan, the Mecca Joint Defense Agreement 2026. We had great discussion, and it happens all the three countries enjoy the best of relations with Norway, and His Excellency has been interacting with our common colleagues, the foreign ministers of all these countries. We agreed on the need to find peaceful solution to the international conflicts in full respect of the principles of international law and the UN Charter. I thank His Excellency, my dear friend, for his visit. I am confident that this visit will open a new chapter in Pakistan-Norway relations and will contribute to greater cooperation and mutual prosperity for the people of both countries in the years ahead. I thank you, Excellency. Over to you. Your Excellency, Deputy Prime Minister, Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar, dear friends, I'm really happy and honored to be here. It's correct that it's 10 years ago since the last Foreign Minister's visit, so it was about time. And I promised you many months ago that I would come, and today I live up to my promise, and I was looking very much forward to this visit, which is short but very effective. And I very much look forward to the remainder of this day, where I have many interesting meetings with the government, also with Field Marshal Munir and with other key players. I want to say, I echo everything that was said. It's a strong partnership between our two countries, between our two communities, the people of Pakistan and Norway. We have a sizable diaspora of Pakistani descent, Norwegian Pakistani citizens in Norway. Many of them are in key positions of politics and society, and are a very welcome contribution to our country. And the fact that we have so many people who know these two countries intimately should also be yet another argument for strengthening our economic ties. So as the Deputy Prime Minister said, we are also discussing that in the context of specifics, but also a desire to strengthen our trade relations in more structural ways, which will be a topic for upcoming discussions, including in the context of the EFTA-Pakistan partnership, which could be developed further, and that would provide for more economic relations for mutual benefit. I also really want to reiterate again our strong support for the very important role that Pakistan has taken in this very dramatic war that started on the 28th of February with the Israeli-US attack on Iran. Norway was one of the Western countries that were clearest and earliest in stating that this war in itself is a violation of international rules. If we stand up for international law, it has to apply to everyone, everywhere, all the time. And even if we have significant disagreements with Iran on other issues, they also have the right to be protected as a state, as we all have. That also means that we had an entry point to Iran, as well as we, as a close ally of the US, have excellent relations with Washington. And knowing this field of peace, mediation, facilitation, I know how hard it is. I know what a massive task you're taking on when you offered Islamabad, not only as the venue, but also as the facilitator of these talks. And I think that what you personally, Mohammad Ishaq Dar, but also your Prime Minister, the Field Marshal, what you have been doing is really a service to the world, and hence also to us. This matters to us as a citizen of the world. It matters also to us as a large shipping nation, because as you mentioned it yourself, we share an interest in open sea lanes, in the ability to trade in the high seas, and to respect the very important the Constitution of the Oceans, which is the UNCLOS, the UN Convention of the Law of the Seas. And whatever emerges from this tragic and unnecessary war in the Gulf, we need to protect the principle of free passage. I'm so happy that we see completely eye to eye on what has to be this. And I would like this opportunity again to send a message to anyone involved out there in that conflict, that this issue of free passage and an open strait is not an issue for the warring parties alone. It's a global issue that we have a shared interest in promoting. I was happy to have this opportunity to discuss other regional issues,
ranging from Jammu Kashmir to Afghanistan, and of course the challenging relationship with that country, and also with activities stemming out of Afghanistan, a country we also know well and where we are also active. I was glad to learn more about this new trilateral defense cooperation. As you kindly mentioned, these are three countries with whom Norway have very good and close relations. Saudi Arabia is the country with whom we established the 2-year-old global alliance to promote the two-state solution in Palestine. Norway has always had a strong dedication to making sure that the promise of what once was the Oslo Agreement one day is fulfilled, that we have a free, sovereign and independent Palestinian state living in peace with its neighbor Israel and all other neighbors. And we keep working on that, and I'm again very happy that this is also an issue where Pakistan and Norway totally agrees and cooperate. And likewise, I mentioned Saudi Arabia, also Turkey is a country that Norway works with closely. So we thought this was a very interesting development, and I was happy to have the opportunity to learn more about it. And then finally, I was very, in my relatively recent past, I was also Minister of Climate and Environment, and for that reason I followed these negotiations very closely. I've seen the extreme effects on Pakistan of floods and other expressions of climate change, and I'm happy to have a foreign minister colleague that is so dedicated to that case. And we agreed that while of course we have specialized ministries for this, it's also a foreign policy issue. And if you need one additional argument for stopping wars, apart from relieving suffering and ending economic harm, it is that mankind should collectively try to focus on the real issues that requires real cooperative action, that includes combating nature loss, climate change, promoting global health and fighting poverty. So these are all issues on our agenda, and thank you very much for hosting me in such a splendid way. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ناروے کے وزیر خارجہ اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ناروے کے وزیر خارجہ مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ دونوں ممالک کی معاشی استعداد بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں. افرادی قوت کی قانونی ہجرت کے فروغ اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا ناروے کے وزیر خارجہ کا ایک دہائی بعد دورہ دونوں ممالک کے لیے تعلقات کے لیے اہم پیش رفت ہے. پاکستان ناروے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کا خواہاں ہیں. اسی پہ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا دورہ مختصر لیکن انتہائی مفید ہے. یوم آزادی کے موقع پر بیرون ملک مقیم کشمیریوں نے پاکستان سے لازوال محبت اور وابستگی کا پیغام دیا ہے. جشن آزادی کی آمد پر معاشرے کے ہر طبقہ فکر کی طرف سے پاکستان سے والہانہ محبت کا بھرپور اظہار کیا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے اور کشمیریوں نے وطن سے دوری کے باوجود پاکستان سے اپنی گہری محبت اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جغرافیائی فاصلے ان کے دلوں کو وطن سے جدا نہیں کر سکتے. ان کی دعائیں آج بھی اپنے ملک کے ساتھ ہیں. ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود 14 اگست آتے ہی دل پاکستان پہنچ جاتا. چاہے ہم دنیا کی کسی بھی ملک میں ہوں، ہماری خوشیاں، ہماری دعائیں اور ہمارے جذبات اپنے وطن اور ہم وطنوں کے ساتھ ہیں. ہم جہاں بھی رہیں پاکستان کی عزت، وقار اور نیک نامی ہمارے لیے باعث فخر ہے. ہماری دعا ہے کہ ہمارا وطن ہمیشہ امن، ترقی، استحکام اور خوشحالی کا گہوارہ بنے. جب یہ دن قریب آتا ہے تو ہمیں وہ قربانیاں یاد آتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے دی تھیں. آزادی ایسے نہیں مل جاتی، آزادی کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اپنا ملک نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. وطن سے دور رہ کر بھی ہمارا دل صرف پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. فاصلے چاہے کتنے ہوں، ہماری شان، ہماری پہچان، ہمارا فخر صرف پاکستان. I would like to salute the Pakistani army for their sacrifices and to make the borders safe
and for the people living in Pakistan. Without the army, we are nothing. So, long live Pakistan and long live the army. یا اللہ میری پاک فوج نو فتح دے, یا اللہ میرے ملک نو سلامت رکھ, یا اللہ اس ملک نے دنیا تے راج کرنا ہے, دنیا دی سپر طاقت بننا ہے. یا میرے مالک, میرے پاکستان آن شان میرا ایمان کا حصہ ہی ہے, میرے وطن عزیز کی حفاظت. پاکستان کی 79ویں یوم آزادی کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کے سرکاری حکام نے پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بالہانہ محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا. آزاد جموں کشمیر کے سرکاری حکام نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ 14 اگست 1947 کا دن برصغیر کے مسلمانوں کی ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کے نتیجے میں پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. حکام نے کہا آزاد جموں کشمیر کے عوام اور ادارے پاکستان کی ترقی, استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. ان کو یوم آزادی کی مبارکباد. پرچم ستارہ و ہلال کی بلندی ہمیشہ ہمارے دلوں کو گرماتی ہے. کشمیر اور پاک سرزمین کا رشتہ جغرافیائی حدود سے بالا تر دلوں کی سانجھی دھڑکن کا نام ہے. دعا ہے ہمارا وطن ہمیشہ امن و ترقی کا گہوارہ بنا رہے. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد. کشمیر اور کشمیریوں کا پاکستان سے ناطہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ نظریے, ثقافت, جغرافیے اور جسم اور روح کی قربانیوں کا ایسا لازوال رشتہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے. تمام اہل وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد. 14 اگست ہماری مشترکہ جدوجہد اور نظریاتی کامیابی کا استعارہ ہے. کشمیر اور پاک سرزمین ایک ایسا ناقابل تقسیم بندر ہے جسے تاریخ نے ثابت کیا ہے. اہلیان وطن کو یوم آزادی مبارک. اس کی مضبوطی, وقار اور سربلندی کے لیے تمام تر صلاحیتیں, توانائیاں روئے کار لانے کا عزم کرتے ہیں. میری طرف سے تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی مبارک. اس سال 14 اگست کا دن جہاں ہمیں جذبہ حریت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے, وہیں پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ تاریخی مکہ بامی دفاعی معاہدے کی صورت میں امت مسلمہ کی مضبوطی اور دفاعی استحکام کا ایک نیا باب بھی رقم کر رہا ہے. اہل پاکستان کو 80واں جشن آزادی مبارک ہو, اور اہل کشمیر کے پہاڑوں سے, لائن آف کنٹرول سے, کھیتوں سے, کوساروں سے, سبزہ زاروں سے اور مرغزاروں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے 14 اگست کو کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. 14 اگست یوم آزادی یہ وہ دن ہے جب مقبوضہ جموں و کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں 14 اگست 1947 کو یوم آزادی بنایا گیا اور کشمیری عوام اس کو اپنی آزادی اور اپنی منزل سمجھتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ممکنہ بارشوں اور اربن فلڈنگ اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے پنجاب کے متعلقہ محکمے ہائی الرٹ ہو چکے ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور جپا نے ایمرجنسی سروسز اکیڈمی اور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا, جہاں سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے انہیں ریسکیو کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی. دورے کے دوران ہنگامی تیاریوں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی حکمت عملی اور ریسپانس کی صلاحیت بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے ڈیزاسٹر ریسپانس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے نئی تربیتی سہولیات کا معائنہ بھی کیا. اسی پہ مزید بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور نعیم انور. جی نعیم انور, بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل جی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ممکنہ بارشوں, اربن فلڈنگ اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے پنجاب کے متعلقہ محکمے ہائی الرٹ ہیں. ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور جپا نے ایمرجنسی سروسز اکیڈمی اور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے, جہاں سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے انہیں ریسکیو کی تیاریوں بارے تفصیلی بریفنگ دی ہے. دورے کے دوران ہنگامی تیاریوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی حکمت عملی اور رسپانس کی صلاحیتوں بارے بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے. ڈی جی پی ڈی ایم اے نے ڈیزاسٹر رسپانس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے نئی تربیتی سہولیات کا بھی معائنہ کیا ہے. پی ڈی ایم اے اور ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ کے درمیان رابطہ کاری مزید مضبوط بنانے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے, جبکہ جدید واٹر ریسکیو بوٹس, لائف جیکٹس,
डी वाटरिंग पंप्स, रेस्क्यू गाड़ियों और दीगर जरूरी आलात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया गया है। इस मौका पर DGPDMA सैफ अनवर जप्पा ने कहा है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आला सतह की तैयारी और अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। PDMA ने तमाम अजला को मुमकिना बारिश और अर्बन फ्लडिंग के पेशगी अलर्ट जारी कर दिए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में रिस्पांस टाइम कम से कम रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि PDMA और SQ 11222 के दरमियान डाटा शेयरिंग और मुश्तरका कंट्रोल रूम का निजाम मजीद बेहतर बनाने पर बहुत शुक्रिया नईम अनवर आपका। नाज़रीन, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारा ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स के मसाइल के हल और मुतासरीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारा ने की। जिसमें महकमा पुलिस, महकमा हेल्थ केयर एंड स्पेशल एजुकेशन, सर्जन मेडिको लीगल और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के आला हुकाम ने शिरकत की। डायरेक्टर एडमिन प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ऑफिस मोहम्मद अरशद अली फारूकी भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में दूर दराज इलाकों में शहरियों को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स के हसूल में पेश आने वाली मुश्किलात तिब्बी मुआयने के बाद फाइनल डिक्लेरेशन के मसाइल और मेडिको लीगल निज़ाम में मौजूद दीगर रुकावटों का तफसीली जायजा लिया गया। आपको बताएंगे, आपको अपडेट करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इरफान सादिक तारा ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने जिला पंजगूर का दौरा किया, जहां उन्होंने पाक फौज के ताउन से मुकम्मल होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने BSDI प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाले जिना IT हब का इफ्तिताह किया। IT हब में 50 जदीद कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और सोलर सिस्टम के जरिए 24 घंटे बिजली की फराहमी का इंतजाम किया गया। इस मौका पर यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और अलामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह किया गया। अलामा इकबाल ऑडिटोरियम की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई, जहां 120 नशिस्तों की गुंजाइश मौजूद है। पंजगूर के शहरियों ने नए तरक्याती मनसूबों पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए फलाही इकदामात का खैर मकदम किया। दौरे के दौरान कोर कमांडर बलूचिस्तान ने मकामी लोगों से मुलाकात भी की, उनके सवालात सुने और उनके मुदल्लल जवाबात दिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।